गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ग्लोबल एसडीजी इंडेक्स। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इंडिया का जो है वो टॉप 100 कंट्रीज़ में पोजीशन आया है इस बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में। 99th रैंक आया है 167 कंट्रीज़ में 2025 के जो एडिशन है इसमें। तो इंडिया ने एक सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू दिया है 99th रैंक सिक्योर करके, और ये फर्स्ट एवर एंट्री है इंडिया की टॉप 100 नेशंस ग्लोबली में। तो ये एसडीजी इंडेक्स जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट का पार्ट है जो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क रिलीज़ करता है। ये इवेलुएट करता है कंट्रीज़ को ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 100। इंडिया का इसमें 67 स्कोर आया है, जो कि एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है जो पहले 109th पोजीशन थी उससे। इंडिया के जो साउथ एशियन पेयर्स हैं जैसे भूटान, उसका 74th रैंक है, नेपाल का 85th है, बांग्लादेश का 114th है, पाकिस्तान का 140th है। इंडिया के जो मैरीटाइम नेबर्स हैं मालदीव्स एंड श्रीलंका, इनका 53rd और 93rd रैंक आया है। सिंस 2015 इंडिया अपनी पोजीशन को स्टेडली इम्प्रूव कर रहा है और ये अब जो है हमें टॉप 100 पोजीशन में देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम ग्लोबल ट्रेंड्स देखें, 2025 का जो ये एसडीआर है ये वार्न कर रहा है कि जो ग्लोबल एसडीजी प्रोग्रेस है वो स्टैग्नेट हो रही है। सिर्फ 17% ऑफ द 169 टारगेट्स की जो है ऑन ट्रैक हैं कि वो 2030 तक अचीव होंगे। यूरोपियन कंट्रीज डोमिनेट कर रही हैं इस इंडेक्स को। ईस्ट और साउथ एशिया जो है वो एमर्ज हो रहा है रीजन्स विद फास्टेस्ट एसडीजी प्रोग्रेस सिंस 2015। और अगर हम देखें तो इंडिया और बहुत सी डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो प्रोग्रेस दिखा रही हैं क्रिटिकल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में, जो कि लेकिन जो ग्लोबल परफॉर्मेंस है वो एक मिक्स पिक्चर दिखाती है। जो कुछ इंडेक्स हैं जैसे एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, मोबाइल ब्रॉडबैंड, रिडक्शन इन अंडर 5 एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी, इसमें तो इम्प्रूवमेंट है। लेकिन जो कुछ और इंडेक्स हैं जो एसडीजीज हैं, जैसे ओबेसिटी, प्रेस फ्रीडम, नाइट्रोजन मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी लॉस, करप्शन परसेप्शन, इन सब में जो है वो एक तरह से सेटबैक देखने को मिल रहा है। और एक और यूनिक इसमें एस्पेक्ट इस बार रिपोर्ट में कवर किया गया है कि कौन सी कंट्रीज सबसे ज़्यादा मल्टीलैटरलिज्म को कमिटेड हैं। अब इसमें बारबाडोस, जमाइका, ट्रिनिडाड एंड टबैको जो है इन्होंने टॉप किया है लिस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है अंडर द बैनर ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये एम कर रहा है कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ पंचायत कैसे स्ट्रेंथन हो। अब ये फोकस करेगा कि कैपेसिटी ऑफ पंचायत को एनहांस किया जाए ताकि वो अपने सोर्स रेवेन्यू जनरेट कर सकें। अब ये इनिशिएटिव जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है अंडर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान इन कोलैबोरेशन विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। तो ये जो प्रोग्राम है ये स्ट्रक्चर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग इनिशिएटिव है रॉबस्ट, रिस्पॉन्सिव एंड फाइनेंशियली केपेबल पंचायत अक्रॉस द कंट्री बनाने के लिए। अब राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है क्या? इसको 2018 में लॉन्च किया गया था एक अम्ब्रेला स्कीम की तरह मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा, और ये एक यूनिक स्कीम है जो प्रपोज करती है डेवलप और स्ट्रेंथन करना पंचायती राज सिस्टम को। स्कीम को रिवैम्प किया गया था एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बना दिया गया, और इसका गोल ये है कि गवर्नेंस कैपेबिलिटीज़ जो है पंचायत की, ताकि वो डिलीवर कर सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनको एनहेंस करना। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने स्लैम किया है ओआईसी को अनवारंटेड और फैक्चुअली इनकरेक्ट रिमार्क्स देने के लिए, और कहा जा रहा है कि वो इन्फ्लुएंस ऑफ पाकिस्तान में दिए गए हैं। तो ओआईसी है क्या? सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर द यूएन। इसको इस्टेब्लिश किया गया था किंगडम ऑफ मोरक्को में 1969 में, ताकि इस्लामिक वैल्यूज़ को प्रिजर्व किया जा सके, सेफ गार्ड और डिफेंड किया जा सके नेशनल सोवरेनिटी को और इंडिपेंडेंस ऑफ मेंबर स्टेट्स को। इसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस अरबिक, इंग्लिश और फ्रेंच है। इसका हेडक्वार्टर जद्दा में है, मतलब सऊदी अरेबिया में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं SVL-DRS। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी, गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो न्यू दिल्ली जो बेंच है कस्टम्स, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल का, उन्होंने कहा है कि रेवेन्यू प्रोसीडिंग्स जो है वो पॉसिबल नहीं है अगर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिल चुका है सबका विश्वास लेगेसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम के अंडर। तो ये SVL-DRS है क्या? वन टाइम एमनेस्टी स्कीम जो कि यूनियन बजट 2019 में निकाली गई थी कि सभी तरह के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर लिया जाए सर्विस टैक्स या सेंट्रल एक्साइज एक्ट के अंडर, जो अब ऑफ कोर्स जीएसटी के अंडर आ चुके हैं, और बाकी के भी 26 अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस जो पहले एग्जिस्ट करते थे। तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था उन टैक्स पेयर्स के लिए जो अपने डिस्प्यूट्स को ख़त्म करना चाहते हैं।
ठीक है। तो सितंबर से दिसंबर 2019 के बीच में ये ऑपरेशनल था इसका स्कीम का पीरियड। इसमें वॉलंटरी डिस्क्लोजर जो है एनकरेज किया जाता था पास्ट डिस्प्यूट्स का। एक एलिजिबल पर्सन जो है अपने अनपेड टैक्स ड्यूज पे करके अपनी एमनेस्टी सर्टिफिकेट ले सकता था। कुछ उनको इम्यूनिटीज़ भी दी जाती थी जैसे पेनल्टी या इंटरेस्ट पर, ठीक है। तो ये स्कीम ने सब्सटेंशियल रिलीफ दिया ऑल ड्यूटी डिमांड्स पर। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्राइस सपोर्ट स्कीम। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने मूंग और उड़द को प्रोक्योर करने के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंडर अप्रूवल दे दिया है। तो प्राइस सपोर्ट स्कीम क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इंडिया के जो है अम्ब्रेला स्कीम पीएम आशा के अंडर इसको लॉन्च किया गया था 2018 में। अब इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है स्कीम को प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑयल सीड्स, पल्सेस एंड कॉटन के लिए, ताकि नाफेड जो है वो प्रोक्योरमेंट कर सके, जो कि एक सेंट्रल एजेंसी है इसकी, एमएसपी पर प्रोक्योरमेंट करती है। नाफेड के अलावा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी जो है वो पीएसएस ऑपरेशंस देखती है स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स में। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? जब प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ जो है वो एमएसपी से नीचे चले जाता है तो जो नोडल एजेंसीज हैं ये डायरेक्टली फार्मर्स से एमएसपी पर परचेज करने लगती हैं, और ये तब तक चलता है जब तक प्राइस स्टेबलाइज नहीं हो जाता। अब प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान क्या है? ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जो रिम्यूनरेटिव प्राइजेस देती है फार्मर्स को फॉर देयर प्रोड्यूस। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। स्टेट कोई भी कंपोनेंट चूज़ कर सकती है। अब इसमें प्राइस सपोर्ट स्कीम तो हमने देख ही लिया। अब प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम क्या है? ये सभी तरह के ऑयल सीड्स को एमएसपी पर प्रोक्योर करने के लिए जो ये स्कीम है। अब ये पायलट ऑफ ये पीपीपीएस क्या स्कीम है? इसमें स्टेट्स के पास ऑप्शन होता है कि वो सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी अलाउ करें कि वो क्रॉप्स की प्रोक्योरमेंट कर सकें। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली आरबीआई ने बहुत सारे पब्लिक और प्राइवेट बैंक्स को रोप इन किया है डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाने के लिए एज पार्ट ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग और गैदरिंग के लिए, ताकि फ्रॉडुलेंट डिजिटल ट्रांजैक्शंस को रोका जा सके। अब ये इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर देगा बोथ पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स के साथ मिलकर। ये एनालाइज करेगा डेटा को फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। आरबीआई का जो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है उसको असाइन किया गया है कि वो एक प्रोटोटाइप बनाए डीपीआईपी का इन कंसल्टेशन विद 5 to 10 बैंक्स। आरबीआई ने एक कमेटी फॉर्म की थी एपी होता कमेटी, उनके ही जो है वो सजेशंस पर ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हीमोफीलिया ए। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। सिंपल और अफोर्डेबल पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट किट बनाई गई है इंडिजिनसली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोहेमेटोलॉजी द्वारा, ताकि अर्ली डायग्नोसिस हो सके जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जैसे हेमोफीलिया ए और वॉन वेलब्रैंड डिसीज़ का। तो हेमोफीलिया ए क्या है? एक हेरिडिटरी ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो तब होता है जब आपका ब्लड सही से क्लॉट ना हो या जैसा उसको होना चाहिए। जब ब्लीडिंग होती है तो कुछ तरह के रिएक्शंस होते हैं बॉडी में जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट होता है, जिसको हम कोआगुलेशन कैस्केड कहते हैं। अब इसमें 20 डिफरेंट स्पेशल प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं क्लॉटिंग करने के लिए, और एक्सेस ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर कोई भी इसमें से फैक्टर मिसिंग हो, खासकर फैक्टर 8, ठीक है, जिसमें अगर वो मिसिंग हो तो हम उसको हेमोफीलिया ए बोलते हैं। और होता क्या है, अनयूजुअली एक ऑल्टर्ड जीन होता है जो पास ऑन हो जाता है चाइल्ड में बाय देयर पेरेंट्स। मैन जो है उसमें ऑल्टर्ड अगर जीन होंगे तो उसमें सिम्टम्स होंगे। विमेन में ज़रूरी नहीं है कि सिम्टम्स हों, लेकिन प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग हो रही है अगर आपको कट या इंजरी होने पर तो वही सबसे बड़ा सिम्टम है। सिम्टम्स जो है वो सर्जरी और इंजरी पर ही दिखते हैं, ठीक है। अदरवाइज तो आपको जब तक कोई कट नहीं लगेगा तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स फिर क्या करते हैं? फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी लेके आते हैं। मतलब जो वो फैक्टर 8 मिसिंग है आपके ब्लड स्ट्रीम में उसको वो जो है वो इंजेक्ट करते हैं आपकी बॉडी में ताकि ब्लड जो है वो क्लॉट हो सके, ठीक है। अब ऐसे ही VWD भी है। ये भी एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड सही से क्लॉट नहीं होता है। लो लेवल्स ऑफ VWD जो है फैक्टर अगर हो, जो कि एक प्रोटीन है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, वो तब भी ये फिर जो है ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। तो मोस्ट पीपल जिनको ये डिसीज़ होती है वो इसी के साथ बॉर्न होते हैं। VWD जो है वो हमेशा सिम्टम्स नहीं कॉज करता है जब तक आपको इंजरी ना हो। कभी कभी तो क्या होता है कि ज़्यादा ब्लीडिंग होने से जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है, और ये तभी दिखता है जब इंजरी या फिर सर्जरी हो कोई। इसको क्योर नहीं किया जा सकता, लेकिन ट्रीटमेंट और सेल्फ केयर के साथ लोग जो है वो इसके साथ जी सकते हैं आराम से, ठीक है। सो नाउ let us see all these topics in English.
So the first topic is Global SDG Index. This topic is important for your social issues. So India has for the first time secured a position among the top 100 countries in the Sustainable Development Goals Index, and it has ranked 99th out of 167 countries in the 2025 edition of this SDG Index. So this is a quite notable achievement. SDG Index is part of the annual Sustainable Development Report, which is released by the UN Sustainable Development Solutions Network. It evaluates countries on a scale of 0 to 100, where 100 represents complete achievement of all SDGs. India scored 67, which is a significant improvement from its 109th position in 2024. India's South Asian peers, including Bhutan, Nepal, Bangladesh, and Pakistan, have also made quite an achievement, especially Bhutan and Nepal. India's maritime neighbors, Maldives and Sri Lanka, have been ranked 53rd and 93rd respectively. Since 2015, India has been steadily improving its position, in this index. But at the global level, if we see it, 2025 SDR is warning that global SDG progress is stagnating. Only 17% of the 169 targets across 17 goals are on track for achievement by 2030. European countries are dominating the upper echelons of this index, and East and South Asia has emerged as the regions with the fastest SDG progress since 2015. India and Mali developings are showing progress on critical development indicators. But global performance presents a mixed picture. For example, some SDGs are performing good. Some, like the access to electricity, internet, and mobile broadband, reduction in under 5 and neonatal mortality. But the report highlights significant setbacks in certain SDGs like obesity, press freedom, sustainable nitrogen management, biodiversity loss, corruption perceptions. And this time, a unique aspect of this report is that it has also assessed the countries who are committed to multilateralism, and it has ranked Barbados, Jamaica, Trinidad, and Tobago as the top of the countries who are committed to the cause of multilateralism. So the next topic is training of trainers program. This topic is important for your governance section. So recently, Ministry of Panchayati Raj under the banner of Azadi Ka Amrit Mahotsav has launched a comprehensive training of trainers program, which is aimed to strengthen the financial autonomy of panchayats. It is focusing on enhancing the capacity of panchayats to generate their own revenue sources. And this initiative is being implemented under the Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan in collaboration with Indian Institute of Management, Ahmedabad. The training of trainers program aims to build robust, responsive, and financially capable panchayats across the country. And what is Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan? It was launched in 2018 as an umbrella scheme of Ministry of Panchayati Raj, and it's a unique scheme proposed to develop and strengthen the Panchayati Raj system. It was revamped as the centrally sponsored scheme later on, and the primary objective of the scheme is to develop the governance capabilities of the panchayats so that they can deliver on SDGs. The next topic is Organization of Islamic Cooperation. This topic is important for your international relations. India has recently slammed the OIC for unwarranted and factually incorrect remarks which were made under the influence of Pakistan. So what is OIC? It is the second largest intergovernmental organization after the UN. It was established upon a decision of the historical summit which took place in Kingdom of Morocco in 1969. It aims to preserve Islamic values, safeguard and defend the national sovereignty and independence of member states. Its official languages are Arabic, English and French, and its headquarters is located in Jeddah, that is in Saudi Arabia. The next topic is SVLDRS scheme. This topic is important for your governance section. So New Delhi Bench of Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal has recently stated that revenue proceedings are not possible after the issuance of discharge certificate under the SVLDRS scheme. So this SVLDRS scheme is a one-time amnesty scheme proposed in Union Budget 2019 and was introduced to resolve all disputes relating to erstwhile service tax and central excise acts, which are now subsumed under GST, as well as 26 other indirect tax enactments. So it was introduced for taxpayers who wish to close their pending disputes with substantial relief provided by the government. And the operational period of the scheme was between September to December 2019. The aim was to encourage voluntary disclosure of past disputes of central excise, service tax, and 26 other indirect tax enactments, and also to facilitate an eligible person to declare the unpaid tax dues and to provide him or her with certain immunities. Okay, so this scheme provided for a substantial relief margin on all duty demands, ranging from 40% to 70% of the demand, except in the case of voluntary disclosure.
So the next topic is price support scheme. This topic is important for your economy section. So Union Agriculture Minister has recently approved a move to procure moong and urad from Madhya Pradesh and Uttar Pradesh respectively under the price support scheme. This scheme, price support scheme, is implemented by the government of India under the umbrella scheme of PM Asha, which was launched in 2018. So this scheme is implemented by Department of Agriculture and Corporation for procurement of oil seeds, pulses and cotton through the NAFED, which is the central nodal agency at the MSP declared by the government. In addition to NAFED, even FCI takes up PSS operations in states and districts. So when the price of commodities fall below the MSP, these nodal agencies come into picture and they start purchasing commodities directly from the farmers at MSP, and procurement is continued until the prices stabilize at or above the MSP. Similarly, what is the PM Asha scheme? It is the umbrella scheme so as to ensure remunerative prices for farmers for their produce. It has three components. The states can choose whichever one they wish to implement. First is the price support scheme, which we have already seen above. What the next one is price deficiency payment scheme, which is proposed to cover all oil seeds for which MSP is notified, and the state governments basically procure it by paying directly to the farmer through into their registered bank account. Then we have the pilot PPPS scheme, in which even private players are allowed to participate in the procurement of crops. Okay. So the next topic is digital payment intelligence platform. This topic is important for our economy section. Recently, the RBI has roped in major public and private sector banks to develop the digital payment intelligence platform as a digital public infrastructure. This platform seeks to bolster fraud risk management by facilitating real-time intelligence sharing and gathering, thereby preventing fraudulent digital transactions. The institutional structure of the proposed entity would be created with the help of both public sector and private sector lenders. It will collect and analyze data from various sources to identify threats and prevent fraudulent activities. So, Reserve Bank Innovation Hub has been assigned to build a prototype of DPIP in consultation with 5 to 10 banks. RBI has formed a committee chaired by AP Hota, which has examined the various aspects of establishing this digital public infrastructure. Okay. So the next topic is hemophilia A. This topic is important for your social issues. So a simple and affordable point of care test kit has been indigenously developed by the National Institute of Immunohematology for early diagnosis of genetic bleeding disorders, hemophilia A and von Willebrand disease. So this hemophilia is a hereditary bleeding disorder which happens when your blood does not clot as well as it should. So when you bleed, a series of reactions take place which help the body to form blood clots. This process is called coagulation cascade. This involves as many as 20 different special proteins, and you may have a higher chance of excess bleeding if one or more of these factors are missing. In hemophilia A, the factor 8 is missing, and it is usually caused by an altered gene which is passed on to a child by their parents. Men with altered gene will have symptoms, whereas women with this altered gene will not have symptoms. Okay, in general. So you do not get to know about hemophilia A until you have an injury or you get to have a surgery, because otherwise you won't have bleeding. And once the bleeding does not stop, only then you identify that you have hemophilia A. So healthcare providers typically treat hemophilia A with factor replacement therapy. They inject concentrated factor 8, which is otherwise missing in the body, into the bloodstream, and this replaces the missing blood protein, which therefore helps blood to clot. So the next topic is von Willebrand disease. This topic is important for your so this von Willebrand disease is a blood disorder in which the blood does not clot properly. So this basically also is similar to hemophilia A, but in this, the von Willebrand factor is missing, and this von Willebrand is basically a protein which helps the blood clot, and this protein does not perform as it should. Most people with this disease are born with it, like in hemophilia A. This is inherited from one or both their parents. It does not always cause symptoms unless you have an injury, and sometimes it is found when you have more bleeding than usual after surgery or giving birth. So it cannot be cured, but with treatment and self-care, most people with this disease can lead active lives. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.